नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हीना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिc science, Jayoti Vidyapeeth Women's University. In today's session, I am going to discuss about USG and X-ray in gynecology. USG is a non-invasive imaging technique which employs sound waves with high frequency into the human tissue to visualize its texture. It was firstly introduced by Ian Denol in 1950. It is widely used in gynecology and it is second most common method of imaging. Because of safety, high patient acceptance and relative low cost, ultrasonography has become a common diagnostic modalities in gynecology nowadays. Transducer prop, transducer pulse control, CPU, display, keyboard, disk storage device and printer are the component of USG. Transducer works as both transmitter of sound waves and receiver of echoes. Received signal from the patient are fed into the computer which forms the image. इस पिक में ट्रांसड्यूसर्स दिखाए गए हैं. There are three types of transducers: sector, linear or curved, which is based on the sound waves distribution on human tissue. Now principle. Imaging modality is based on piezoelectric effect, which is a property of certain substance to convert electric energy to sound energy. This substance is lead zirconate titanate, which is commonly used in active portion of ultrasonic transducer. This is the machine controllers. Scanning plane are of three types: sagittal, coronal, and left lateral orientation. The longitudinal, vertical, and anteroposterior view are taken in sagittal. Horizontal, transverse, and transpelvic views are taken in coronal. इस फिगर में लॉन्गिट्यूडनल व्यू शो हो रहा है. ये मोस्टली एब्डोमिनल मेनली यूटरस को देखने के लिए किया जाता है. इसमें ट्रांसवर्स व्यू शो हो रहा है. ये लेफ्ट और राइट विजुअलाइजेशन, ट्रांसवर्स विजुअलाइजेशन है जिसमें ओवरी को देखने के लिए किया जाता है. Transabdominal, transvaginal, and transvaginal color Doppler sonographies are the types of USG. Transabdominal sonography. In transabdominal sonography, bladder should be full. Full bladder will push bowel away from the field acoustic window. Consent verbally should be taken. Female attendant should be present. Privacy should be maintained. Procedure is done gently, and before going to the procedure, brief gynecological history should be taken by ultrasonologist. The abdominal and vaginal sonography is done with a linear or curvilinear array transducer operating at 2.5 to 3.5 megahertz. Means ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी में 2.5 से 3.5 मेगाहर्ट्ज की ट्रांसड्यूसर साउंड वेव्स यूज की जाती हैं और इसमें लीनियर और कर्वीलीनियर एरे ट्रांसड्यूसर्स यूज किए जाते हैं. अल्ट्रासाउंड इज वेरी एक्यूरेट, more than 90% in recognizing a pelvic mass, but cannot stabilize a tissue diagnosis. Tissue resolution of less than 0.2 mm can be obtained with sonography. Transabdominal sonography is best used for large masses like fibroid or ovarian tumor. Higher is the frequency of ultrasound wave, better is the image resolution, but lesser is the depth of tissue penetration. यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स की होगी उतना ही इमेज रिजोल्यूशन अच्छा होगा, लेकिन टिश्यू पेनिट्रेशन की डेप्थ उतनी ही कम होगी. Now transvaginal sonography.
In transvaginal sonography, bladder full is not needed. Wear a pair of gloves, and then vaginal sonography is done with a probe which is placed close to the target organ transvaginally. यानी इसमें ट्रांसवेजाइनली प्रॉब इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस ऑर्गन जो टारगेट ऑर्गन है उसके नियरली. Transvaginal sonography operates at a high frequency, means 5 to 8 megahertz. Therefore, detailed evaluation of pelvic organ within 10 centimeter of field is possible with TVS. It has a range of about 10 to 8 to 10 centimeter. यानी जो विजाइनल प्रॉब है उसके 8 से 10 सेंटीमीटर के एरिया में जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनका डिटेल्ड इवेल्युएशन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हो जाता है. Transvaginal probe movements are penetrating, means introducing into vagina, then rocking, means anteroposterior movement, then sliding movement, means lateral movement, and then rotating movement to 45 to 90 degree. Drawback of transvaginal sonography is it cannot done in virgin, elderly postmenopausal women, in the case of post radiation stenosis in children, and when a patient have psychosexual disorders. Now, transvaginal color Doppler sonography. It provides additional information of blood flow to, from, or within an organ, uterus or adnexa. This flow can be measured by analysis of the waveform using the pulsatility index. Now, uses of sonography in gynecology. It is used firstly for infertility workup. In infertility workup, ovarian follicular diameter and endometrial thickness is measured by USG. Normally, matured follicle are 18 to 20 mm in diameter, and the pre-ovulatory endometrium is 7 to 11 mm in thickness. It also provides presumptive evidence of ovulation. Uh, After ovulation, internal echoes appear within ruptured follicle and free fluid is observed in pouch of Douglas. To detect the correct timing of ovulation by follicometry in conjunction with plasma estradiol, this helps in induction of ovulation, artificial insemination, and ovum retrieval in IVF. And the sonographic guided oocyte retrieval in IVF and GIFT program is now accepted as the best method. यानी इनफर्टिलिटी वर्कअप में फॉलिकल मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या डायमीटर है, ये देखने के लिए यूएसजी का यूज किया जाता है. और सेकंड थिंग, एंडोमेट्रियम प्रॉपर फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है. नॉर्मली जो प्री ओवुलेटरी एंडोमेट्रियम होती है वो 7 to 11 mm होती है थिकनेस में. थर्ड वन, फॉलिकल रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगता है. पाउच ऑफ डॉगलस में फ्री फ्लूइड होगा और उसके अलावा जो इंटरनल इको है वो भी चेंज होगा. इसके अलावा यूएसजी का यूज oocyte रिट्राइवल में किया जाता है आईवीएफ और जिफ्ट मेथड में, और इसके साथ ही ओवुलेशन के टाइमिंग को भी डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है आईवीएफ की प्रोसीजर के टाइम. ये मैच्योर्ड फॉलिकल को शो कर रहा है. ये पॉइंट्स जो बने हैं वो मेजरिंग पॉइंट्स है, और इस सोनोग्राफी में यहाँ फॉलिकल रप्चर हो रहा है, रप्चर फॉलिकल शो कर रहा है. Second use is in ectopic pregnancy. It detected on TVS as a tubal ring separate from the ovary in a patient with empty uterine cavity. मतलब अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो यूटेराइन कैविटी जो है वो एम्प्टी होगी, एंड
जो इक्टोपिक साइट है, मोस्टली इक्टोपिक साइट जो है वो ट्यूब्स होती हैं, इसलिए ट्यूब्स में प्रेगनेंसी शो होगी या ट्यूब में गेस्टेशनल सेट दिखेगा। तो इस पिक्चर में ये इंट्रायूटेराइन गेस्टेशन है और ये इक्टोपिक गेस्टेशन है, यानी ये मल्टीपल प्रेगनेंसी शो कर रहा है। इसमें ये इक्टोपिक ट्यूबल रिंग है जो कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी को शो कर रही है। Third, use in pelvic mass. It is evaluated as regard to its location and consistency, like uterine fibroid, ovarian mass, endometrioma, tube ovarian mass, etc. Can be delineated when there is confused in clinical diagnosis. इस डायग्राम में ये ट्यूब ओवेरियन मास को शो कर रहा है और फाइब्रॉइड्स को, ये एंडोमेट्रियोमास को शो कर रहे हैं। In oncology, TVCDS can assess the vascularity of the mass, low flow impedance with high flow velocity raise the suspicion of a malignant tumor. Presence of papillary excrescence, mural nodules, septation, cystic lesion with solid component, snowstorm appearance, which is found in HMOL, and ascites are the other sonographic features of malignancy. This is the snowstorm appearance, which is found in hydatidiform mole, and this is the uh, nodules and septations found in the uh, pelvic organs. USG is also used in endometrial disease to detect endometrial disease, to locate missing IUD, and to detect PCOS. This picture shows endometrial thickness, hyperplasia of the endometrium. इसमें endometrial thickness जो है वो more than 11 और 12 mm होती है। ये सोनोग्राफी नेकलेस अपीयरेंस शो कर रही है जिसमें मल्टीपल फॉलिकल शो हो रहे हैं, ये पीसीओएस को डिटेक्ट कर रही है। और इस सोनोग्राफिक व्यू में मिसलोकेटेड आईयूसीडी को लोकेट कर रही है, उसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन को बता रही है। Sonography is also used in the procedure of sonohysterography, sonohysterosalpingiography, or sonographic guided procedures like aspiration of cystic mass, example chocolate cyst, follicular aspiration like ovarian retrieval in IVF, aspiration of tubo-ovarian abscess, and biopsies like saline infusion sonography. Now, X-ray in gynecology. A chest X-ray and intravenous urogram are essential for investigation in pelvic malignancy, cervical cancer in particular, prior to staging. Plain X-ray of the pelvis is helpful to locate an IUCD or to look for shadow of teeth or bone in benign cystic teratoma. Special X-ray using contrast media are HSG. Lymphangiography is used to locate the lymph node involved in pelvic malignancy. This diagram shows plain X-ray of pelvis and lower abdomen showing the calcified degeneration of the fibroid. Popcorn appearance. ये पॉपकॉर्न अपीयरेंस शो कर रहा है एक्सरे। This X-ray shows straight X-ray of abdomen and pelvis with an ovarian tumor showing arrow the shadow of a tooth, dermoid cyst. ये जो टूथ की जो शैडो आ रही है ये डर्मोइड सिस्ट को शो कर रहा है।
So thank you. Hope you all are satisfied with my session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.